I think we are live now. Hi, everyone. We will be live for another 15 minutes in case anybody would, join in the live stream and have any questions. As today was an eventful day with interim budget by our finance minister, and I'll kind of cover some key insights and some headlines around what was in the budget, and do you need to really bother about your current investments in equity markets and especially in our small cases. So I'll wait for another 30 seconds and see if anybody is coming live on YouTube. And if you have any questions, so I'm just checking YouTube. 1 second. Okay. Okay. Yeah, so I can see I'm live on YouTube and I can see my chat screen as well, which is now open. So feel free to join in, feel free to tune in, feel free to ask direct questions. बजट तो देखिए मार्केट ने इतना वैसे भी इंटरिम बजट था since this is an election year and in a couple of months new government will be formed and there will be full budget. So interim budget में government of course as anticipated would not want to do anything which will have a negative sentiment to the market. So markets के लिए कोई ऐसा negative surprise नहीं है. थोड़ा सा है कि जहाँ सेक्टर्स में जैसे पावर है फर्टिलाइजर्स है इंफ्रा डिफेंस पीएसयू जो बहुत रन देख रहे हैं आप पिछले 2-3 महीने से एंड इवन पिछले 2023 में वहाँ पे कोई कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया जो मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रहा था. सो उन सेक्टर्स में थोड़ा मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है आज पोस्ट द बजट वाज कंक्लूडेड. Other than that, headline index, Nifty, Bank Nifty, I think they are pretty at the same level. And उनके लिए वो एक कोई event है नहीं. I mean, that was not an event as such for those headline indices. But as I said, uh, 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 but as I said, some profit booking of course happening in those sectors. कुछ अच्छे न्यूज़ हैं मार्केट में जैसे कि एटलीस्ट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज स्टिल टू कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपेक्स. सो जो 11 लाख करोड़ का अराउंड इन्वेस्टमेंट था पिछले पिछले बजट में भी वो आई थिंक कंटिन्यूड है. थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है जो कि अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी है विच इज़ अ वेरी गुड साइन विच शोज दैट ओवर द लॉन्ग रन infrastructure, maybe steel, cement, all these sectors would see good growth in 2024 because वहाँ पे intent है government का to continue to invest in capex, right? And from a income salaried individual, no change in income tax slab, which is also a good sign कि जो आपके slabs पिछले साल चल रहे हैं they remain at the same level. थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट पे नंबर्स हैं जो इंटेंट तो गवर्नमेंट का है टू गेट टू 5.1 ऑफ जीडीपी which is a much better proposition to where I think we are at right now 5.8 I believe. So वहाँ पे भी एक I would still call it as the a good number there. एंड उससे उसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएंगे बढ़ेंगे एंड इंपोर्ट कंट्रोल में लाया जाएगा टू कंटिन्यू टू गेट टू अ better target on that 5.1 of what Nirmala Sitharaman has spoken about, which would also mean that EV sector में green portfolios में the entire transition which is happening into the EV space वहाँ पे more investments आएंगे. So from a perspective of what it means to you or what it means to your small cases, I think कोई भी impact नहीं है. As you would see, broad markets also are not kind of reacting to that budget, and it is not an event anymore. The reason being, अभी continuously government updates देते रहते हैं, right? अभी नहीं ऐसा नहीं होता कि budget का wait होता है and then the announcement comes every other month, every other quarter. Government will have some announcements coming up. And therefore budget has now become a non-event that way. हमारे portfolios की बात करें तो we finished 2.5 months, so we will be finishing 3 months on 9th, and on our 3 months first quarter completion we are launching our very first theme based small case जो थोड़ा long term perspective से we are trying to put together. And that theme we will of course talk about in detail over a YouTube video once we launch that. And that theme वो theme है जो हम as a team as a organization बहुत bullish हैं for India for Indian investors for the next 4-5 years.
So please, yeah, I mean, looking forward to launch that on 9th, and I look forward for the same love and support you have shown in our existing portfolios to the our new small case which are launching on 9th. और मैं क्विकली देख लेता हूँ यूट्यूब पे कोई कमेंट्स हैं. ओके, तरुण पाल का क्वेश्चन आया है. तरुण पाल इज आस्किंग, सर आपके अल्फा और मोमेंटम स्कॉल में इसमें क्या डिफरेंस है, विच शुड आई सब्सक्राइब. ओके, सो तरुण, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है. देखिए, मोमेंटम एज द वर्ड सजेस्ट, मोमेंटम इज समथिंग व्हेन समथिंग इज इन अ ट्रेंड, the expectation is that it will continue that trend for a little longer period. That is called momentum investing, right? आप और small case भी देखोगे जो और fund managers manage करते हैं, which are on momentum, and momentum simply means things which are in a rising trend continue to be in that trend for a little longer period. So price जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ बढ़ता रहेगा. That is the very basic concept of momentum. हम लोग ऑफ कोर्स, क्योंकि वी आर अ क्वांट बेस्ड टीम, हम लोग थोड़ा उसमें एक अपना अपना प्रोप्राइटरी क्वांट मेथड्स लगा के थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, एंड देन कम आउट विद सम मोमेंटम स्कोर, एंड देन डू अ टॉप डाउन स्क्रीनिंग ऑफ स्टॉक्स टू come to a filtered layer of very concentrated 40-50 names from the entire Nifty 750 universe by making sure that they pass corporate governance check, they pass quality checks, all of that, and then of course do a bottom up of momentum ranks to find the momentum portfolio. Alpha का difference क्या है कि alpha is not necessarily the trend, right, the trend picker, but it is picking the stocks which are beating their respective benchmarks. So कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो अपने लार्ज कैप इंडाइसिस बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, कौन से मिड कैप स्टॉक्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं. सो अल्फा में क्या होता है, एक और लेयर ऐड हो जाती है जिसे बोलते हैं बीटा का लेयर, एक वोलेटिलिटी का लेयर. सो अल्फा और मोमेंटम ये फेजेस होते हैं. देयर विल बी अ फेज व्हेन मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स वंडरफुली वेल इन इंडिया, वो ट्रेंड चल रहा है, चलता रहता है. और एक फेज आता है जब मोमेंटम will of course perform, but it the alpha will overtake that, from a statistical point of view as well. Alpha भी एक statistical measure है. एक जेंसिस अल्फा करके एक कॉन्सेप्ट होता है, आप गूगल करके पढ़िएगा. So alpha takes care of the selections of stocks which beat their benchmark, as well as the entire portfolio has the right beta, the right volatility. So that is the difference. आप क्या सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करें बेसिस योर प्रेफरेंस, कि आप एक बेटर एक ट्रेंड को पूरा कैप्चर करना चाहते हैं व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर, एंड मार्केट्स आर द ब्रॉड मार्केट्स आर वेरी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मोमेंटम विल आउट परफॉर्म अल्फा बिकॉज अल्फा में थोड़ा सा volatility का check है. And if you looking for little long term investments, then alpha will outperform because in long term जो risk adjusted returns आपको मिलेंगे with volatility in consideration वहाँ अल्फा में मिलेंगे. So that way अल्फा and momentum are different. बट अगर और भी क्वेश्चन है तो कोई बताइए. जय श्री अंबुरे पूछे, व्हाट डू थिंक अबाउट एनएचपीसी एंड टाटा पावर. देखिए, मैं स्टॉक बेस्ड रिकमेंडेशन यूट्यूब पे नहीं करता डायरेक्ट ऐसे. अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, आपको मैं यहाँ पे लिंक पिंग कर रहा हूँ, जो हमारा डायरेक्ट लिंक है टू बुक एनी 1-to-1 मीटिंग विद अस एंड द टीम. मैंने अभी अभी पिंग करा meet.goalfi.app. इससे आप मीटिंग बुक कर लीजिए जयश्री. फेस टू फेस बात करेंगे वहाँ पे. आपकी जो करंट होल्डिंग्स हैं उनको रिव्यू करना है, एंड अगर आपको कोई भी यू अंडरस्टैंड मोर ऑन specific company, specific sector, we can of course answer directly. I don't want to really call out in a public platform any names because that is not in the right spirit of the SEBI regulations. और मैं आपको अपना पर्सनल भी कैलेंडर लिंक पिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आप जाके anytime you can book a meeting with me for a one-to-one meeting, and we'll of course take that. All right, so these were the two. Okay, and thanks very much, Tarun Pal, for asking the question, and I hope I answered. Please let me know if that was that gave you the required clarification on your question of alpha and momentum. And Jayashri, please book the meeting, and you want to talk about NHPC and Tata Power. Absolutely, we'll talk about that in one-to-one. Okay, और कोई, मैं और 2-3 मिनट ऑनलाइन हूँ in case you have any questions, or but mainly that was the update on the budget. बाकी तो फिर से अभी इलेक्शन में आएंगे, गवर्नमेंट बनेगी, we'll have the full budget again, and then I'm sure जो सेक्टर्स पे फोकस चल रहा है या चल रहा था, चाहे वो डिफेंस हो, PSUs हो, I'm sure there will be some investments will be seen
from the government. Okay. Okay. Tarun is saying thank you. Okay, I answered his question. Okay, Jeffrey also is okay. Okay, so that was a quick update, everyone, and thanks for tuning in. And I will keep you posted on our 9th of Feb, completion of 3 months of our small cases. And yes, thank you very much. We crossed 10 crore worth of investments, just 2 days ago, which is done by all of you, our 500 investors via small cases, GoalFi small cases. So thank you very much for helping us achieve 10 crore ka milestone. And we'll keep you posted. Thank you so much. I'll now end. Okay, what is the difference prime and balance, Jayashri? Okay. Okay, so if you as okay, I'll take that question. देखिए, prime का जो पूरा नाम है वो है prime quality golfi picks, right? Which means these are the companies which are the right quality. For example, अगर आप देखो हमारे 6 factors हैं, मैं आपको quickly 1 मिनट में 3 6 का difference बता देता हूँ, so that you understand balance क्या है. Balance का हमारा नाम है balance basket study gains. Balance में हम volatility देखते हैं, volatility as a factor. Prime quality में हम quality as a factor देखते हैं. अल्फा में हम अल्फा एज अ फैक्टर देखते हैं, मोमेंटम में हम मोमेंटम एज अ फैक्टर देखते हैं, वैल्यू में हम वैल्यू एज अ फैक्टर देखते हैं, ग्रोथ में हम ग्रोथ एज अ फैक्टर देखते हैं. ये फैक्टर होते क्या हैं? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कॉल मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग, जहाँ पे ये बात पिछले इंडिया का 20 25 साल का आप डेटा उठा लो, या वर्ल्ड में इन यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केट्स, इफ अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट रिसर्च पेपर्स भी अच्छे से रिव्यू करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो S&P 500 हो, चाहे वो अपना निफ्टी 500 हो, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस ऑफ कोर्स बीट करते हैं अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स को, अपने एक पैसिव, आई मीन वहाँ डिबेट नहीं एक्टिव वर्सेस पैसिव का, बट इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं. सो इन अ लॉन्ग 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 वेरी वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस, equity markets outperform, say, gold. Equity market outperform real estate. Equity market outperform fixed deposit, like debt instruments. उसमें these are broad market indices, right? चाहे आप S&P 500 लो, निफ्टी 500 लो, निफ्टी 50 लो, ये these are market cap based indices कि जो बड़ी कंपनी है वो उसमें हाईएस्ट मार्केट शेयर रखती है, एंड अकॉर्डिंगली निफ्टी 50 बनता है. निफ्टी 50 में HDFC बैंक, इन्फोसिस का ज्यादा मार्केट कैप होता है क्योंकि वो बड़ी कंपनीज हैं, तो दैट विल हैव हायर वेटेज इन निफ्टी 50. इन्फोसिस मूव होगा, HDFC मूव होगा, रिलायंस मूव होगा, तो निफ्टी 50 अच्छा खासा मूव होगा. वर्सेस व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टर इन्वेस्टिंग, वहां पे जो इम्पोर्टेंस है वेटेज का, वहां पे मार्केट कैप को नहीं दिया जाता, वहां पे कुछ फैक्टर्स को दिया जाता है. वो फैक्टर कुछ भी कुड बी एनीथिंग. Factor could be market cap also, like the size, which is the broad market. Factor could be alpha, right, which is a statistical measure of, as I said, stocks which are beating their benchmark continuously, momentum stocks which are in momentum, value, which means the company which are at low valuation, and or if they're at high valuation, they are actually showing a growth, tremendous growth of 30 40% compounded growth, such as example could be Varun Beverages, right? Very high valuation, but still showing a very high growth. Could be quality again, उनका चाहे आप फंडामेंटल पैरामीटर्स ले लो, चाहे आप P/E रेशो, P/P रेशो, EV/EBITDA रेशो, डिविडेंड यील्ड देखिए, तो वो हमारे अलग अलग फैक्टर हम अपना क्वांट जो हमारा मॉडल है, we kind of give weightage to one factor for that portfolio, say 70% weightage, and remaining 30% weightage जो है उस portfolio में we decide based on the market trend कि इस समय market में the quality factor is more important. So आपकी quality वाले portfolio में 70% तो quality weightage है, which means सारी company 70% of the company will be at a very right quality score. They are high quality companies in terms of their books, right? Similarly, on the value portfolio, the 70% weightage will be on value, which means the company with a low valuation. Balance में we give 70% weightage to companies which are have low volatility. कि जब मार्केट बढ़ेगा, जब मान लीजिए गिरेगा, तो वो स्टॉक्स they will be low volatile, they will fall less, for example. सो उसमें हम बैलेंस बास्केट में 70% लो वोलेटाइल वोलेटिलिटी को बेसिकली वेटेज देते हैं. 30% वेटेज हम ऐड ऑन करते हैं विच इज डायनेमिक, विच डिपेंड्स ऑन मार्केट. क्या है, मार्केट को अल्फा हमें ऐड करना है, तो बैलेंस बास्केट विल बिकम
your 70% low volatile plus 30% alpha, or your balance basket in the next rebalance could 70% low volatile plus 30% momentum, depending on the market condition. So this is a difference between uh, Jayashri, this is a difference between what was the question? Yeah, balance basket and prime quality. और कोई क्वेश्चन है तो बताइए. And yes, also apologies for missing the last Saturday live. I was traveling and therefore couldn't come online. But I will make sure that I again be live this Saturday after 2 days, and every Saturday I will be live. चलिए मैं फिनिश करता हूँ ये स्ट्रीम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट करिए इस वाले वीडियो पे, एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर